Good morning, all of you. Today we will discuss line topic length and angle. My question is: if two parallel lines are cut by a transversal, prove that the bisector of the interior angle on the same side of the transversal intersect each other at right angle. अब यहाँ पर डायग्राम आपका नहीं दिया हुआ है. Given two parallel lines draw AB parallel to CD. Two lines T is transversal. AB parallel to CD or T is transversal intersects AB at E, CD at F. Two parallel lines are cut by a transversal. A transversal is T. Prove that the bisector of interior angle BEF is one interior angle, BFE is other interior angle, bisector of both interior angle. This is bisector and this is also bisector. Meet at EF, meet at G. To prove EGF is right angle, means 90 degree. Diagram is clear. Now, first of all, write given after diagram AB parallel to CD. T is a transversal line intersects AB and CD at E and F. Also, bisector of angle BEF bisector of angle BEF and angle DFE meet at G to prove आपको यहां पर टू प्रूव आपको प्रूव करना है एंगल EGF एंगल EGF इक्वल टू 90 डिग्री. क्या प्रूव करना है? एंगल EGF इक्वल टू 90 डिग्री. अब आइए प्रूफ में. जब कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन में डायग्राम गिवन टू प्रूव इफ एनी कंस्ट्रक्शन राइट कंस्ट्रक्शन देन प्रूफ.
आप पढ़े हो if AB parallel to CD, T is transversal, sum of co-interior angle is 180 degree. यहाँ पर एंगल BEF प्लस एंगल DFE इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, या आप शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल्स में लिख सकते हैं. ओके. If EG and FG are the bisector of both angle, bisector means 2 से डिवाइड करना, dividing both side by 2, dividing both sides by 2. इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं. तो एंगल BEF बाय 2 प्लस एंगल DFE बाय 2 इक्वल टू 180 बाय, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिए. तो BEF को अगर हाफ करें 2 से डिवाइड, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा. ये भी 1 तो ये भी 1, क्योंकि बाइसेक्टर है. ये एंगल 2 तो ये भी एंगल 2, बाइसेक्टर है. ओके. तो हाफ एंगल BEF इक्वल टू एंगल 1, और इसका हाफ लिखना है. दिस इज एंगल 1 प्लस हाफ एंगल DFE is also angle 2 equal to 180 divided by 2, 90 degree. This is your second equation. Okay. Angle 1 plus angle 2 equal to 90 degree. 1 means this angle, 2 means this angle is equal to 90 degree. Find proof करना है EGF. Now in triangle EGF में, now in triangle EGF, angle 1 plus angle 2 plus angle EGF, 1 plus 2 plus angle EGF equal to 180 degree. 180 degree. Division sum of angle of a triangle. Sum of angles of a triangle. Okay. From equation 2, 1 plus 2 is equal to 90 degree. इस दोनों का सम 90 प्लस एंगल EGF इक्वल टू 180 डिग्री. इट इज क्लियर. हाँ. 90 प्लस एंगल EGF, 90 को ले आइए राइट साइड में, तो एंगल EGF 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री. प्रूव. फिर से एक बार देख ले. अगेन, two parallel lines AB and CD, T is transversal. Prove that bisectors of interior angle, this angle and this angle is interior angle,
on the same side, यानी एक ही साइड का, this side plus this side, on the same side of the transversal intersect each other. Prove that bisector of interior angle on the same side of transversal intersect each other at right angle. तो हमें इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर सेकेंड इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जहां मीट किया वहां प्रूफ कीजिए 90 डिग्री, यानी टू प्रूव EGF equal to 90 degree. We know that sum of interior angle is sum of co-interior angle is 180 degree या supplementary angle. वही हम लिखे dividing both sides by 2, 2 से डिवाइड कर दिए both side, half angle BEF equal to 1, half angle BFE equal to 2, and 1 plus 2 equal to 180 by 2 equal to 90 degree. Now nth angle EGF में angle 1 plus angle 2 plus angle EGF 180 degree, and sum of angle of a triangle. From equation 2, 1 plus 2 is equal to 90 degree. Therefore, EGF 180 minus 90 is equal to 90 degree. Proved. Okay? Second question is question number 2. एक डायग्राम दिया हुआ है, name A, B, C. This point is D. Angle A is alpha degree. Angle B is beta degree. And angle C is gamma degree. Alpha, beta, and gamma. Angle ADC is x degree. Angle ADC is x degree. So in given figure prove that x is equal to alpha plus beta plus gamma. Plus beta plus gamma. It is the symbol of alpha, beta, gamma represent angle A, angle B and angle C. अभी यहाँ पर अल्फा बीटा गामा के नाम से है. आपका सेम क्वेश्चन डिग्री में भी दिया जा सकता है. एंगल कुछ डिग्री में दिया हुआ रहेगा, फाइंड करना है एंगल एक्स. इसमें ज्वाइन बीडी, हम बीडी को ज्वाइन करते हैं, प्रोड्यूस टू ई. ज्वाइन बीडी प्रोड्यूस टू ई, हम ई तक प्रोड्यूस किए. यहाँ पर
This angle is P, this angle is Q, this angle is R, this angle is S. नाम दे दिए और टोटल एंगल B is beta और total angle D is X. Okay? Now beta is equal to this beta is equal to P plus Q angle P plus Q and X is equal to R plus S. R plus S. Equation 1 and 2. It is equation 1 and equation 2. Also, R is the exterior angle of triangle ABD. Angle R is the exterior angle of triangle ABD. Exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. आणि angle R is equal to alpha plus P. Alpha plus P. Similarly, angle S is equal to S is also exterior angle of triangle SBC. This angle is equal to Q plus gamma. S is equal to Q plus gamma. These are exterior angle is equal to sum of इंटीरियर अपोजिट एंगल. इसका हम लोग प्रूफ पढ़े हैं, अभी केवल रीजन लिखते हैं. नाउ ऐड बोथ इक्वेशन R plus S. After adding R plus S equal to alpha plus gamma plus P plus Q. P plus Q. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, R plus S is equal to X equal to alpha plus P plus Q is equal to beta plus gamma. No. आपको प्रूव करना था x is equal to alpha plus beta plus gamma. Again, I repeat. To prove x is equal to alpha plus beta plus gamma, कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो कहीं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन BD प्रोड्यूस टू E. यही कंस्ट्रक्शन में दिखा दो. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD प्रोड्यूस टू E. प्रोड्यूस टू E. ज्वाइन BD प्रोड्यूस टू E. अब नाम दे देते हैं. जैसे P is divided in two parts. First part angle P, other part angle Q. So beta is equal to P plus Q. Similarly, X angle divided in two parts named R and S. R plus S,
x is equal to r plus s. Equation 1 and 2. Now angle r is the exterior angle of triangle ABD. Our exterior angle is equal to sum of interior opposite angle, and the angle R is equal to P plus alpha. P plus alpha, or S is equal to Y या Q plus gamma. Q plus gamma. Adding both equations, R plus S is equal to alpha plus P plus Q plus gamma. From equation 1 and 2, this equation is 1, this is 2, 1 P plus Q equal to beta, put P plus Q equal to beta. R plus S is equal to X, X is equal to alpha plus beta plus gamma. तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question, number 3. The sum of two angles of a triangle is 116 degree. The sum of two angles of a triangle is 116 degree, and their difference is 24 degree. Find all angles of the triangle. इस ट्रायंगल का तीनों एंगल फाइंड कीजिए. ड्रॉ ए ट्रायंगल whose name is A, B and C. According to question, the sum of two angles of a triangle is 116 degrees. So let two angles be angle A and angle B. In triangle ABC, given angle A plus angle B equal to 116 degree. Also, and their difference is 24 degree. I mean, if A is greater than B, the angle A minus angle B equal to 24 degree. I mean, A plus B equal to 116 degree, or angle A minus angle B is 24 degree. Also, their difference is 24 degree. Find all angles of the triangle, means angle A, angle B and angle C. अब इस दो इक्वेशन से हमको A, B, C फाइंड करना है. We know that the sum of angle of a triangle is 180 degree.
angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. तीनों एंगल का सम 180 डिग्री. But in equation 1 to from A plus B equal to 160 degree. From equation 1 A plus B equal to 116 and 160 degree plus angle C equal to 180 degree. Therefore, angle C 180 minus 160 degree. 180 minus 116, 10 minus 6, 4, or 7 minus 1, 6. And we find angle C is equal to 64 degree. First angle find 64 degree. Now find angle A and angle B. A and angle B. अभी आपको फाइंड हुआ है ओनली एंगल C फाइंड हुआ. C is equal to now adding equation 1 and 2. अगर आप 1 और 2 को ऐड कर लेते हो यहीं पर after adding equation 1 and 2 plus B or minus B cancel angle A plus A twice angle A equal to 6 plus 4 10 2 3 or plus 1 4 1 140 degree angle A is equal to 140 by 2 70 degree and angle A is equal to 70 degree. Also find angle A is 70 degree. Now find angle B. Angle B is equal to 180 minus sum of angle A plus C. A plus C and 70 plus 64. 180 minus 134. 10 minus 4, 6, 7 minus 3, 4, and 46 degree. Angle B is equal to 46 degree. And find angle A 70, angle B 46, angle C 64. यहाँ एक लास्ट में से देखोगे all angles, angle A, angle B and angle C is equal to A is equal to A find 70 degree, B find 46 degree and C find 64 degree. It is your answer. तो ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का था जो आप खुद एंगल मान लिए. इसमें कहीं प्रॉब्लम कौन नहीं निकला. अच्छा फिर अच्छा ओके क्लियर. The sum of two angles of a triangle is 160. हम मान लिए एंगल A प्लस एंगल B, टू एंगल का सम 160 and their difference and एंगल A माइनस एंगल B 24. आप इस दोनों इक्वेशन को एक लाइन ड्रॉ करके ऐड कर दो. आफ्टर एडिंग प्लस B और माइनस B विल बी कैंसिल. ओके, क्योंकि एक प्लस B है और माइनस B है.
अगर यहाँ प्लस और माइनस के ए और बी के प्लेस पर अगर एक्स रहता तो प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या होता है? जीरो। बच गया ए प्लस ए ट्वाइस एंगल ए और इस दोनों का सम 140। तो ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 140, एंगल ए इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 2 यानी 70 डिग्री। ओके, अब क्लियर है? दो इक्वेशन को सम कर दिया, एडिशन आफ्टर एडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Two angles of a triangle are equal. Two angles of a triangle are equal, and the third angle is greater than each one of them by 18 degree. Find the angle. Find the angle. Again repeat this question. Two angles of a triangle are equal, and the third angle is greater than each one of them by 18. Find the angle. First, draw a triangle whose name is A, B and C. Two angles are equal. Let angle B and angle C are equal. Given in triangle ABC, angle B equal to angle C, तो मान लिए हम x डिग्री। Okay, two angles are equal, and third angle means angle A. Third angle is greater. This angle is greater than each one of them by 18. Third angle means angle A, or angle A is greater. Angle A is greater than by B and C. Greater than each one of them by 18 degree. यानी angle A is equal to x plus 8. Clear? Angle A is x plus 18. Then angle A is equal to x plus 18 degree. Find angle A is find the angle. And you find the angle A, but also angle B and also angle C. We know that
angle of a triangle is 180 degree. Means angle A plus angle B plus angle C 180 degree. Therefore, angle A 3x is equal to 180 minus 80, x is equal to 54 degree. Then if angle A is equal to 72 degree, angle B and angle C is equal to